Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, I am Sir Ali Nazim from Excel Group of Colleges, Sialkot, and my subject is English, Language and Literature. Today the topic of my discussion is important translation paragraphs from book 1, and today's lesson is button. Paragraph number 1. The package was lying by the front door. A cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, to 17th E 37th Street, New York. New York 10016. Norma picked it up, unlocked the door and went into the apartment. It was just getting dark. बंडल सदर दरवाजे के साथ पड़ा हुआ था। एक मुकाबलमा डिब्बा जो टेप के साथ बंद किया हुआ था, जिस पर उनके नाम और एड्रेस हाथ से लिखे हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस, टू 17 E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। New York 10016. नॉर्मा picked it up. नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की। Unlocked the door. दरवाज़ा खोला and went into the apartment. और कमरे में चली गई। It was just getting dark. अभी शाम हो रही थी। Paragraph number 2. Inside the carton was a push-button unit fastened to a small wooden box. A glass dome covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the unit over and saw a folded piece of paper, scotch taped to the bottom of the box. She pulled it off. Mrs. Stewart will call on you at 8 p.m. Inside the carton was a push-button unit fastened to a small wooden box. इस डिब्बे के अंदर एक बटन यूनिट था जो कि इसके तह में लकड़ी के डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। A glass dome covered the button. एक शीशे का गुंबद नमा इस बटन को ढांपे हुए था। Norma tried to lift it off. नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की, but it was locked in place. मगर ये अपनी जगह पर जुड़ा हुआ था। She turned the unit over and saw a folded piece of paper. उसने इस यूनिट को उठाया और इसमें एक तह किया हुआ कागज का टुकड़ा देखा। Scotch tape to the bottom of the box, जो इस डिब्बे के पैंदे में टेप के साथ जुड़ा हुआ था। She pulled it off. उसने इसे उखाड़ा। Miss Stewart will call on you at 8 p.m. मिस स्टीवर्ट आपको रात 8 बजे कॉल करेंगे। Paragraph number 3. They went into the living room and Miss Stewart sat in Norman's chair. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. Inside here is a key to the bell unit dome, he said. He set the envelope on the chair side table. The bell is connected to our office. What's it for? Asked Arthur. If you push the button, Miss Stewart told him, somewhere in the world someone you do not know will die.
and in return for which you will receive a payment of 50,000 American dollars. They went into the living room. वो बैठक की तरफ चले गए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया. He reached into an inside coat pocket. उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला and withdrew a small sealed envelope. और एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला. Inside here is a key to the Bell unit room. इस लिफाफे में बेल यूनिट की चाबी है. He said, उसने कहा. He set the envelope on the chair side table. उसने वो लिफाफा चेयर के साथ पड़ी हुई मेज पर रख दिया. The bell is connected to our office. इस घंटी का कनेक्शन हमारे दफ्तर के साथ है. What is it for? ये किस लिए है? Asked Arthur. आर्थर ने पूछा. If you push the button, अगर आप बटन दबाते हैं, Mr. Stewart told him. Mr. Stewart ने उसे बताया. Somewhere in the world, दुनिया में कोई, you do not know will die, जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा. In return for which you will receive a payment of $50,000. और बदले में आपको $50,000 रकम मिलेगी. Paragraph number 4. The package was lying by the front door. Norma sighed as she left the elevator. Well, of all the knob, she thought. She glared at the curtain as she unlocked the door. It just won't take it in, she thought. She went inside and started dinner. Later, she went into the front hall. Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen. Leaving it on the table, she sat in the living room, looking out the window. After a while, she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. She put the package in the bottom cabinet. She'd throw it out in the morning. The package was lying by the front door. बंडल सदर दरवाजे के साथ पड़ा हुआ था. Norma saw it as she left the elevator. जो ही नॉर्मा सीढ़ियों से उतरी, उसने इसे देखा. Well, ठीक, उसने पूरी तवज्जो से सोचा. She glared at the curtain as she unlocked the door. जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने इस बटन की तरफ घूर कर देखा. It just won't take it in. क्या उसने कहा कि मैं इसे अंदर नहीं लेकर जाऊंगी. I just won't take it in. मैं इस बटन यूनिट को अंदर नहीं लेकर जाऊंगी. She thought, उसने सोचा. She went inside and started dinner. वो कमरे में चली गई और रात का खाना शुरू कर दिया. Later she went into the front hall. फिर वो सामने वाले हॉल की तरफ गई. Opening the door, दरवाज़ा खोलते हुए, she picked up the package. उसने इस बंडल को उठाया and carried it into the kitchen. और इसे किचन में ले गई. Leaving it on the chair on the table, इसे मेज पर रख दिया. She sat in the living room. वो बैठक में बैठ गई. Looking out the window, और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया. After a while, थोड़ी देर के बाद, she went back into the kitchen to turn the cutlets. वो दोबारा किचन में गई और गोश्त के टुकड़ों को उल्टाया. In the broiler,
चूल्हे में। She put the package in the bottom cabinet. उसने इस बंडल को सबसे नीचे वाले खाने में रख दिया। She would throw it out in the morning. और उसने सोचा कि वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। Paragraph number 5. In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. Impulsively, she dropped them into her purse. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. Only Mrs. Stewart's name and telephone number were printed on the card. सुबह के वक्त जो ही वो घर से निकली, नॉर्मा saw the card halves on the table. उसने कार्ड के टुकड़े मेज पर पड़े हुए देखे। Impulsively, जल्दी से, she dropped them into her purse. उसने उनको अपने पर्स में डाल लिया। She locked the front door. सामने वाले दरवाजे को बंद किया। And joined Arthur in the elevator. और आर्थर के साथ लिफ्ट पर बैठ गई। While she was on her coffee break, जब वो चाय के वक्फे पर थी, she took the card halves from her purse. उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाले and held the torn edges together. और इसके फटे हुए टुकड़े जोड़ना शुरू कर दिया। Only Mrs. Stewart's name and telephone number were printed on the card. कार्ड पर सिर्फ मिसेस स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। Here are some important words from these paragraphs. Page number 1 is package. And the synonyms and easy words for this word is parcel, bundle, container. Package means parcel, bundle and container. Fastened, जुड़ा हुआ होना, attached, fixed, folded, तयशुदा, creased, doubled, bent, hallway, corridor, entrance, offensive, annoying, unpleasant. Monetarily, माली लिहाज से, पैसों के लिहाज से, फाइनेंशियली, कैश वाइज। स्टेयर्ड, बहुत घूर कर देखना, गौर से देखना। लुक्ड, केस्ड, फास्ट। लिबर्टी, आज़ादी, मीन्स परमिशन, राइट, अथॉरिटी। क्यूरियस, immoral, sinful, evil. Native, local, resident, citizen. So इसी के साथ ही मुझे सर नाज़िम को इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ और ये वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सिनोनिम अंडरस्टैंड करने में मदद मिली होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।